Assalamu alaikum. Hello everyone. Hopefully you are doing fine. In today's session, I'm going to talk about surrealism in literature. It emerged out of Dadaism, the movement that included similar ideas, techniques to release the unconscious self, exploration of ways to express in the art of the world of dreams and the unconscious. Inspired by Freud and Jung, interested in the nature of dreams, in dreams, people moved beyond the constraints of society. Artists to bring inner and outer reality together. There are two forms of surrealism. One is biomorphic, interested in the forms, and the second one is naturalistic, recognizes scenes of nightmares or dream images. Surrealism as a movement or a style of arts and literature developed principally in the 20th century, in which fantastic visual imagery from the subconscious mind is used with no intention of making the artwork logically comprehensible. It involves fantasy and dreams. It is illogical. It stresses the subconscious. It it involves automatism to allow your subconscious mind to take over in art, and then it demented sense of humor. It is the time period between the world wars, First World War and the Second World War. It was founded by the poet and the critic Andrew Britton, who published the Surrealist Manifesto, and later on also the work of Sigmund Freud joined this particular theoretical moment where the unconscious of the mind was the focal point of attention of this particular literary movement. Surrealism in literature is a movement that explores the unconscious and dreamlike aspects of reality, often incorporating bizarre and illogical juxtaposition of images and ideas. It seeks to transcend the boundaries of logical and reason, tapping into the subconscious to create narratives that are both strange and meaningful. It explores the unconscious, and unconscious exploration is the focal point of this particular literary moment. Surrealist literature delves into the depths of unconscious mind, exploring dreams, fantasies, and the realm of subconscious juxtaposition and disconnect. It frequently features unexpected and illogical combination of images, objects, and concepts, creating a sense of surrealism and disorientation. And then it also involves the symbolism and metaphor, symbolist symbolism and metaphor. Surrealist works often utilize symbolism and metaphors to convey deeper meanings and explore human psyche. Likewise, if we go further, we can see that how automation over here uh, and free association also is one of the feature of surrealism. Some surrealist techniques involve using automation and then automatic writing, where the writer's thoughts flow freely without any conscious control, and free association to explore the connection between seemingly unrelated ideas. Then the next characteristic is to challenge the reality. Surrealist literature challenges the traditional understanding of reality, exploring the possibility of multiple or alternative realities. In essence, surrealist literature aims to challenge conventional notions of reality, to explore the depths of the human psyche,
to create a sense of wonder and mystery, to potentially provide a new perspective on the world and human experience. The example of surrealist movement would be from the Metamorphosis by Franz Kafka, that is considered to be a surrealist work due to its central premise, where a man, Gregor Samsa, transforming into a giant insect. This bizarre and illogical event, along with the story's exploration of the absurd, fits within the surrealist tradition. The transformation itself is a key example of surrealism, disrupting the normal order of reality and exploring themes of alienation and dehumanization. The transformation, where Gregor Samsa's metamorphosis into a giant insect, is the utmost striking example of surrealism. It's the fantastical event that defies natural laws and creates a sense of bizarre and unsettling. Here, beginning with its first sentence, the metamorphosis deals with an absurd or wildly irrational event, which in itself suggests that the story operates in a random and chaotic universe. The absurd event is in Gregor's waking up to disorder, as he has turned into a giant insect, and since it's so far beyond the boundaries of a natural occurrence, it's not just unlikely to happen, it's physically impossible. Gregor's metamorphosis takes on superhuman or supernatural significance. Also notable to the facts of the story that never explains Gregor's transformation. It never implies, for instance, that Gregor's change is the result of any particular cause, such as punishment or some misbehavior. So, here are some of the examples from the work of painting, where you can see and find out the meanings related to your own social, personal, societal, or spiritual circumstances, where you could see and correlate some of the examples and understand the realities in your own particular subconscious mind and according to your own personal background. All these examples suggest, like these two examples, first one where the lady is sitting on the couch, and in the second one where coffin is placed on the same couch. So here you can also see the example from the painting of Rain Magritte, where the therapist 1941, how the man is sitting and the birds are in cage, and the man also seems or to cage the bird, or you can interpret it according to your own understanding. Also the example presented before you of a cigar cage, and then the example related to the horizon, how an eye witnesses the sky, and the example of human association and connection, where the faces are covered, and that presents the story of the faceless lovers. The example of Salvador Dali, who was also a painter, he also personified some of the images, where you could see how these particular images reflect the kind of absurd nature or nightmarish reality, where various symbols related to time, trees, and other things, where the things indicate that the time is twisted and the power has
shifted everything according to the wishes of the controller or the influencer. So these are the other examples that you can see, and they correlate from the paintings, and where you could see that how the various surrealist ideas related to absurdities, blurring of boundaries, unconscious self, dreamlike situation are reflected in all these images. I'm not going to explain them. You can explain or you can deduce meaning according to your own situation. So let me summarize the same lecture in Urdu or Hindi briefly, where you can see that how symbolism is relevant to surrealism. So एक ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, डेडाइज्म से रिलेटेड है, और जिसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे हमारा अनकॉन्शियस सेल्फ की वर्किंग होती है। इसका अगर हम ताल्लुक देखा जाए तो हमें फ्राइड या यूंग के कामों से मिलता है, जिन्होंने ड्रीम्स के ऊपर काम किया, और ड्रीम्स में जहाँ पे इंसान अपने सारे के सारे हदूद व क़यूद से आज़ाद हो जाता है, और उन हदूद और क़यूद के आज़ाद होके एक राइटर भी अपने इनर और आउटर रियलिटी को डिपिक्ट करता है। सो एक ऐसा स्टाइल है जो तख़य्युलात की दुनिया को और ख्वाबों की दुनिया को देखता है, जिसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता, हर चीज़ मर्ज़ी से उड़ रही होती है, जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड को जो तहत शऊर है और लाशऊर है वो अलाउ किया जाता है, तो चीज़ें ऑटोमेशन की तरफ जाती हैं और ख़ुद ब खुद चीज़ें फ्री राइटिंग की तरफ से निकल के देखी जाती हैं किस तरीके से वो डिपिक्ट होती हैं। तो इसको थ्योरी को क्रिएट करने वाले या बनाने वाले जो शायर थे और क्रिटिक थे, उनका नाम था आंद्रे ब्रिटन। सेगमेंट फ्राइड का भी बहुत रोल है। इसी तरीके से अगर अब अदब में देखा जाए तो ये मूवमेंट अनकॉन्शियस से ड्रीम लाइक सिचुएशन से निकलती है और एक इनकारपोरेट होती है कहाँ पर, एक इलॉजिकल और बेजार बड़ी बेभदी सी सिचुएशन होती है, जहाँ पे जक्स्टापोज किया जाता है, अपोजिट मीनिंग लिए जाते हैं बहुत से इमेजेस के और सारे आइडियाज़ के। तो बाउंड्रीज ट्रांसेंड होती हैं, लॉजिक की, अकल की, रीज़न की, सबकॉन्शियस में जाके नैरेटिव्स को क्रिएट किया जाता है मीनिंगफुल वेज के अंदर। सो अगर आप सरियलिस्ट लिटरेचर को देखेंगे तो इसकी गहराई को देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या देखेगा, आपके शऊर को देखेगा, तहत शऊर को देखेगा, लाशऊरी दुनिया को देखेगा, ड्रीम्स को देखेगा, आपके तख़य्युलात को देखेगा, आपकी ख्वाहिशात को देखेगा, आपकी फैंटेसीज़ को देखेगा, और इसी तरीके से बहुत सी अदर चीज़ें जो देखी जाएंगी, वहाँ पे जक्स्टापोजिशन देखी जाती है, डिस्कनेक्ट दिया देखा जाता है जो इमेजेस का रियलिटीज़ के साथ होता है, सिंबल मेटाफर देखे जाते हैं, ऑटोमेशन फ्री एसोसिएशन को देखा जाता है, और रियलिटी को चैलेंज किया जाता है इस काम के अंदर। तो एसेंस के अंदर देखेंगे तो आप रवायती तख़य्युलात को चैलेंज किया जाता है, इसी तरीके से डेप्थ को एक्सप्लोर किया जाता है, और एक सेंस ऑफ वंडर क्रिएट किया जाता है, मिस्ट्री का सेंस क्रिएट किया जाता है, और एक न्यू पर्सपेक्टिव जो ह्यूमन देखा जाता है। तो इसकी एग्जांपल काफका की स्टोरी से मिलती है, जहाँ पे जो मेजर करेक्टर था ग्रेगर सैम्सा नाम का, जो अपने आप को सोता है तो सुबह उठता है एक मक्खी के अंदर, बहुत जो है ना जाइंट मक्खी के अंदर अपने आप को ट्रैप पाता है, और उस ट्रैप के अंदर ये जाके सारी सिचुएशन को देखता है। तो जो एक रियलिटी के अंदर एक डीह्यूमनाइजिंग एस्पेक्ट है, और इस डीह्यूमनाइजिंग एस्पेक्ट के अंदर देखा जाता है कि किस तरीके से राइटर या करेक्टर उसका पार्ट बन जाते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज, यू कैन रीच मी आउट through the comment section below. Stay tuned, stay happy, and stay blessed.